Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, आज ଆମେ class 9th ର physics syllabus ର first chapter motion start କରିବା. But before starting this chapter, let me give you some brief idea about your syllabus. So in class 9, in physics, you have total 5 chapters and the chapters are the first chapter is motion and each chapter ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା we will discuss about what is the difference between rest and motion, some of the terms that is used in motion like distance, displacement, speed, velocity, acceleration, then uniform circular motion, centripetal acceleration, centripetal force, time period of revolution, frequency of revolution. Then we will discuss about what is uniform motion, non-uniform motion. We will derive the equations of motion by algebraic method, by graphical method. We will discuss about the graphs of motion. So this is all about your first chapter. The second chapter is force and laws of motion. So a chapter ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା? We will discuss about what is the meaning of momentum, what is inertia, the three laws of motion, first law, second law, third law. From the second law of motion, we will derive the mathematical formula for force. Then we will discuss about the conservation of momentum. Okay, all these things. Next chapter hochi gravitation. So in this chapter we will discuss about what is the meaning of gravitational force, what is Newton's law of gravitation, what is gravity, what is acceleration due to gravity, what is its value, and then we'll discuss about thrust and pressure, then buoyancy, and then Archimedes principle. Fourth chapter is work, energy and power. So in this chapter we will discuss about the meaning of work, the formula to calculate work in different cases. Then we'll discuss about energy, the types of energy. Basically we'll discuss about kinetic energy and potential energy, and then we'll discuss about the formula for kinetic energy, the formula for potential energy, and then we'll discuss about the conservation of energy, the principle of conservation of energy, and the conversion of energy from one form to another form. And they will discuss about power, what is power, its formula, its unit, and we'll discuss about the commercial unit of energy. The last chapter of your physics syllabus is sound. So in this chapter we'll discuss about how is sound produced, different characteristics of sound wave like amplitude, wavelength, frequency. Then we'll discuss about echo, the applications of echo, reverberation, ultrasound, infrasonic sound, then sonar, all these things. So this syllabus contains 5 chapters and all the chapters are very important. I hope that all of you will enjoy this series of 5 chapters. So today being the first lecture of this series, I'll start the first chapter, that is motion, and motion chapter first class re ame discuss kariba the difference between rest and motion, and then we'll discuss about two terms, that is distance and displacement. So let's begin. So motion chapter first ame jo concept discuss kariba, that will be the difference between rest and motion, rest versus motion. Tamane what are the differences between rest and motion? So forget about physics, forget about science. जदि मु तमनको किछि example देबी of different bodies and I will ask you to identify which bodies are at rest and which bodies are moving, then you can easily answer those questions from your common sense. Suppose I will ask you that mountains, suppose mountains, then trees, buildings. So if I ask you that whether these bodies are at rest or they are moving, then what will be your answer? Definitely your answer will be that these substances are at rest. Okay. But if I ask you, or if I give you example of flying bird, suppose a bird is flying and a running train, a running train, a swimming man, okay, swimming. So if you look at these bodies, then you'll say that all of them are moving. A bird flying is in motion,
the train running is also in motion, and a man swimming in a river or in a swimming pool is also in motion. So the first three examples is for the bodies at rest, and the next three examples are for the bodies in motion. ठीक है? So we have applied our common sense to identify which substances are at rest and which substances are moving. But from physics point of view, how to define rest and motion? Because in science you have to write the definition. So the question is how to define rest and motion. So just look at the examples, the mountains, trees, buildings, and then look at the next three examples: flying bird, running train, and swimming man. So from your common sense, you are told that the first three examples is for the bodies at rest. The next three examples are for the bodies in motion. So how did you know that? What are the differences between the first three examples and the next three examples? तो जदि आम ए डिफरेन्स को भलसे ऑब्जर्व करिबा देन आमे कहि परिबा जे जदि गोटे बॉडी तार पोजीशन को चेंज न करूची विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देन दैट बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट. बट जदि गोटे बॉडी तार पोजीशन को चेंज करूची विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज इन मोशन. ठीक अच्छे आम देखुचे सपोज गोटे माउंटेन अच्छी तो से माउंटेन टा वर्तमान जो प्लेस थी आफ्टर 1 मिनिट बा आफ्टर 5 मिनिट्स आफ्टर 1 डे आफ्टर 1 ईयर से सेम प्लेस थी तमाने द पोजीशन ऑफ द माउंटेन इज नॉट चेंजिंग. सिमिलरली इफ यू लुक एट ए ट्री then you'll see that the position of the tree is also not changing. The position of your house is also not changing with respect to time. Then you can say that these bodies are at rest. But if you observe a bird which is flying, then definitely the position of the bird is changing. So you say that the bird is in motion. Similarly, suppose a train is running, the vehicles are moving, then definitely the positions of those vehicles, the trains, or if a person is swimming in a swimming pool, then the position of the person is also changing with respect to time. So if the position of an object changes, then we will say that the body is in motion. So from this discussion we can write what is the definition of rest and what is the definition of motion. So first is about rest, so I can write that if the position of an object does not change with time, it is said to be at rest. Okay, then what is motion? The opposite of rest. tamane if the position of a body changes with time, then it is said to be in motion. If the position of an object changes with time, then it is said to be in motion. ठीक है. तमाने by observing the position of an object we can determine whether the body is at rest or it is moving. So now the next question arises that what is the meaning of position? Position रो meaning कौन? What is the meaning of position? तो जितेबाला आमे ए पोजीशन विषय डिस्कस करूचे we need a frame of reference. ठीक अछि. So the position माने आमे कहि परिबा जे the location of the body. ठीक अछि. Suppose I will ask you where the Jagannath temple is located, so you can say that it is located at Puri. So position माने कौन? Location. But remember that whenever you are defining the position of an object, you should choose a reference point. Reference point रो importance कौन?
Suppose I will ask you that what is the distance of Bhubaneswar? What is the distance of Bhubaneswar? Then you cannot answer this question because the question is itself wrong. So if I ask you that the distance of what is the distance of Bhubaneswar, then this question is itself wrong. Because whenever I am asking what is the distance of this place, I have to mention from which city or from which location. So if I slightly modify this question and I'll ask you that what is the distance of Bhubaneswar from let us say Balangir. What is the distance of Bhubaneswar from Balangir? Then you can easily answer this question. So here Balangir is the reference point because you are measuring the distance of Bhubaneswar from Balangir. So to measure the distance or to locate a given point, you need a reference point. Okay. So again, I am telling you that position means it is the location of the object. Suppose an object is placed at this point. Okay. This is the point at which the object A is located. So if I ask you what is the position of this object, then you have to choose a reference point. Okay. So I'll show you that if I change the reference point, then the position of the object will also change. Suppose I'll choose point P1 as the reference point. It means I am going to define the position of the point A with respect to the point P1. So suppose this distance is let us say 3 centimeter. Okay. So if you are defining the position of the point A with respect to the point P1, then you can say that the point A is located 3 centimeter right to P1. 3 centimeter right of P1. Is that clear? But if the second person chooses P2, if the second person chooses P2 as the reference point, then the position of A with respect to P2 will be different. Suppose this distance is 4 centimeter. Okay. The distance of the point A from P2 is 4 centimeter. Then for the second person, the point A is located 4 centimeter below P2. 4 centimeter below P2. So here we saw that if we change the reference point, then the position of a given particle is also changing. It means the position depends upon the reference point. Okay. That's why reference point is very important while defining the position of an object. Okay. So usually what happens whenever we find the position of an object in physics, usually the reference point is taken to be the origin. Reference point is taken to be the origin. आमे सदाबेले कौन करू ना origin रो respect रे आमे से गोटे particle बा गोटे body रो position को define करता हूँ. ठीक अछि. And what is origin? आमे जानी चे आमे जो graph draw करंती आमे जानी चे we have x-axis, we have y-axis. So the point of intersection of these two axes is known as origin. ठीक अछि. तो आमे एई origin respect रे आमे different point रो position को आमे ताको define करिबा. Suppose गोटे particle एठी अछि. So we'll define the position vector like this. Okay. If particle B एठी अछि, then this is the position vector like this. Okay. What is the meaning of position vector? सेटा तमे समस्ते क्लास 11th रे पढिबो. बट रिमेंबर दिस टर्म जे आमे जते बेले पोजीशन को डिफाइन करू, we always define it with respect to a reference point, and usually the reference point is taken to be the origin. Okay, is that clear? ठीक अछि. तो once आमे define कले what is position, and आमे तब देखिबा जे whether the position of the object is changing with respect to time or it is not changing with respect to time. जदि चेंज होथिबो then the body is in motion, ଆଉ जदि से object or position change होनी with respect to time, then the body is in rest. Okay. Next I may discuss kariba some of the important terms related to this rest and
मोशन। तो फर्स्ट टर्म है कौन ना डिस्टेंस and the second term is displacement, distance versus displacement. So now our discussion will be the comparison between distance and displacement. What are the differences but what are the similarities between distance and displacement? तो distance word को हमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ रे यूज करू बट डिस्प्लेसमेंट वर्ड को आम यूजुअली यूज कर न थाउ। तो फिजिक्स रे आम देखा जे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे आर नॉट सेम दे आर डिफरेंट। तो डिस्टेंस रो मीनिंग कौन डिस्टेंस रो मीनिंग होची कौन ना द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। जिते गोटे बॉडी मूव करुच्ची से जो पाथ रे मूव करुच्ची से पाथ रो लेंथ को मेजर करबा दैट इज द डिस्टेंस। सपोज ए बॉडी बा हम कहि परिबी ए व्हीकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड इट इज गोइंग टू द पॉइंट बी। ठीक है, सपोज ए इज वन सिटी एंड बी इज अनदर सिटी एंड a car is traveling from A to B and suppose this is the road which connects A with B। तो एबे कौन हम कारटा बा से जो पार्टिकलटा पॉइंट ए रु बाहर पॉइंट बी रे पहुँचब एंड द बॉडी विल फॉलो दिस रोड। ठीक अच्छे, तो ये रोड जो ट्रैवल करुचे से रोड रो एक्चुअल लेंथ जहाँ थी ताको हमें कहबा डिस्टेंस। ठीक अच्छे, सो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल इज द डिस्टेंस। सपोज आम गोटे व्हीकल रे मूव करुचे कार हो कि बाइक हो कि बस हो एवरी व्हीकल हैज ओडोमीटर। ओडोमीटर काम कौन ना ओडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। सपोज आम गोटे पॉइंट ए रु बाहर एंड विल गो टू ए पॉइंट बी। सो पॉइंट ए आम तेरे जर्नी स्टार्ट करुचे सपोज ओडोमीटर रीडिंग के थी 5386। ठीक अच्छे, एंड एट द एंड ऑफ द जर्नी सपोज द रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर इज 5398। ठीक अच्छे, देन आमे कहि परिबा जे व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल वी विल सबट्रैक्ट दिस टू वैल्यूज इट आसीबो 12 किलोमीटर। ता माने द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल इज 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को हमें केमते मेजर करिबा ना डिस्टेंस को मेजर करिया पई वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स। तो आमे डिस्कस करिबा एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। तो एसआई रा माने कोन आको में कहिबा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस रे मीनिंग कौन सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड फॉर्म रे आमे देखो एक्सप्रेस करिबा। तो एसआई सिस्टम रे डिस्टेंस रो यूनिट कौन द यूनिट इज मीटर। ठीक अछि, एंड इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ डिस्टेंस विल बी सेंटीमीटर। ठीक अछि, इन एसआई द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, इन सीजीएस द यूनिट ऑफ डिस्टेंस विल बी सेंटीमीटर and remember that 1 meter is equal to 100 centimeter। ठीक है, but we also have some larger unit of distance like मैं कहि परिबे किलोमीटर किंबा लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑल दिस थिंग्स। बट मन रख जे यूजुअली आमे जते बेले गोटे सिटी रु आगो सिटी को ट्रैवल करते फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस then we always measure the distance in terms of kilometer। so most of the cases रे traveling time रे आमे किलोमीटर वर्ड को भलसे माने most of the time आमे यूज करथाओ। so 1 kilometer is equal to 10 to the power 3 meter बा आकु मैं कहि परिबी 1000 meter। ठीक अछि, बट रिमेंबर दैट आमे तेरे किछि प्रॉब्लम सॉल्व करिबा किछि न्यूमेरिकल सॉल्व करिबा तो से केस रे डिस्टेंस को आमे एक्सप्रेस करिया मीटर है बिकॉज यूजुअली आमे जते भी किछि क्वेश्चन सॉल्व करथांती द आंसर शुड ऑलवेज बी इन एसआई सिस्टम। ठीक अछि, जदि किलोमीटर देथिबो वी हैव टू कन्वर्ट इट टू मीटर। से डिपेंड करिबो क्वेश्चन ऊपर। जदि क्वेश्चन डिमांड करूथिबो जे टू फाइंड द आंसर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर वी विल फाइंड द आंसर इन किलोमीटर, but if the question demands to find the answer in meter then we have to find the answer in meter। so we have to make the suitable conversion। जेमति मु कहली 1 meter equal to 100 centimeter तो मुझे कहि 1 centimeter will be how much meter it will be 1 by 100 meter। सेमति 1 kilometer equal to 1000 meter तो 1 meter कथा हो एटा हे जिवो 1 by 1000 kilometer। ठीक अछि, so this is all about distance। नेक्स्ट आम डिस्कस करबा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रो मीनिंग कोन
देखो डिस्प्लेसमेंट रो मीनिंग कोन आको में कहि परिबा इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स तमन इनिशियल पॉइंट आउ फाइनल पॉइंट भितर जो शॉर्टेस्ट पाथ थिबो ताको में कहिबा डिस्प्लेसमेंट कहिबा सो ज्योमेट्री कोन कहूची माने को देखो ए होची गोटे पॉइंट बी होची आ गोटे पॉइंट सपोज गोटे बॉडी स्टार्ट करूची फ्रॉम पॉइंट ए एंड इट इज ट्रैवलिंग टू द पॉइंट बी सो ए को हमें कहिबा इनिशियल पॉइंट आउ बी को हमें कहिबा फाइनल पॉइंट ठीक अछि ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द फाइनल पॉइंट सो ए जो दुईटा पॉइंट भितरे डिस्प्लेसमेंट केते बा डिस्प्लेसमेंट कहा कहिबा कोन लिखा है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स सो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री दुईटा पॉइंट भितर शॉर्टेस्ट पाथ कोटा हबो ना ए स्ट्रेट लाइन ठीक अछि सो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री जदि आमे दुईटा पॉइंट को जॉइन करिबा यूजिंग ए स्ट्रेट लाइन देन दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ तो एबे हमें कोन करिबा ए को जॉइन कर देबा बी रे यूजिंग ए स्ट्रेट लाइन दिस स्ट्रेट लाइन ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट ता माने सपोज गोटे व्हीकल ट्रैवल करूची ए रु बी ट्रैवल करूची बट इट इज ट्रैवलिंग इन ए कर्व पाथ से एक्चुअली ए पाथ ट्रैवल करिची आ ए पाथ रो डिस्टेंस बा ए पाथ रो लेंथ आमे केते पाइचे लेट अस से 12 किलोमीटर पाइचे ठीक अछि तो एटा होची 12 किलोमीटर बट जदि आमे डिस्प्लेसमेंट देखिबा डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ तो ए रु बी भितरे शॉर्टेस्ट पाथ कोटा हबो आमे जो स्ट्रेट लाइन ड्रा करिचे से स्ट्रेट लाइन रो लेंथ सपोज दिस लेंथ इज 10 किलोमीटर ठीक अछि तो एटी डिस्प्लेसमेंट केते हिजबो the displacement will be 10 kilometer the distance is 12 kilometer and the displacement is 10 kilometer मन रखता displacement रो value always distance रु कम हबो किंबा इक्वल हबो केबे भी displacement रो value टा distance रो value रो अधिक होई परिबो नाही काहे कि ना displacement रो मीनिंग होची shortest path तो जेहेतु डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ तो ताठारु आहुरी किछि कम हेई परिबो नाही इट इज इम्पॉसिबल ठीक अछि तो मन रखो डिस्प्लेसमेंट माने कोन ना शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स आउ गोटे डिफरेंस कोन आसीबो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ना डिस्टेंस होची गोटे स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी displacement is a vector quantity so what is the difference between scalar and vector so you will study about vector and scalar in details in class 11 but for now for your simple knowledge remember that physical quantities can be classified into two categories that is scalars and vectors स्केलर में कहा कहबा ना जो फिजिकल क्वांटिटी रो केवल वैल्यू थिबो केवल मैग्नीट्यूड थिबो मैग्नीट्यूड माने कोन वैल्यू ठीक अछि मन लगता मैग्नीट्यूड रो मीनिंग कोन ना वैल्यू बा में कहि परिबा न्यूमेरिकल वैल्यू तो जो फिजिकल क्वांटिटीज रो केवल मैग्नीट्यूड थिबो बट नो डायरेक्शन there is no direction किछि दिग नथिबो बा there will be no direction ताको में कहिबा स्केलर्स वेक्टर का कहिबा ना जो फिजिकल क्वांटिटी रो मैग्नीट्यूड थिबो एज वेल एज डायरेक्शन थिबो ओके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ताको में कहिबा वेक्टर सो एबे देखो हम लिखिबा एठी जदि केवल असला मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड no direction ताको में कहिबा स्केलर क्वांटिटी ठीक अछि आ जदी गुटे फिजिकल क्वांटिटी रो कोन थिबो बोथ मैग्नीट्यूड थिबो आ डायरेक्शन थिबो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ताको में कहिबा वेक्टर ठीक अछि सो जदी मु एग्जांपल देबी स्केलर क्वांटिटीज रो देन एग्जांपल कोन आसीबो ना डिस्टेंस स्पीड work energy power so these are the examples of scalar quantities जहार किछि डायरेक्शन नाही ओनली मैग्नीट्यूड अछि बट वेक्टर एग्जांपल कोन आसीबो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन
momentum, all these things. Okay, these are the examples of vectors. तो जेहेतु आम ये लिखिले जे डिस्टेंस होची गोटे स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज नो डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी ता माने डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आमे जानिबा केमती जे डिस्प्लेसमेंट रो डायरेक्शन कोटा. It is very simple. Remember that displacement is always directed from initial to the final position. Displacement is always directed from initial to the final position. तो एक जो मैं एग्जांपल ड्रॉ करते जो फिगर में ड्रॉ करिजे ए फिगर रे देखो initially the particle but the vehicle was at the point A and finally it goes to the point B. ठीक है जी. तो आम ए कौन कले डिस्प्लेसमेंट को आम केमती शो करेले बाय ड्रॉइंग ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स. तो एबे आम जो वेक्टर शो करबा बा आम जो डायरेक्शन शो करबा द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी. तो एबे एरो मार्क मो केम देली फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी. काहे देली ना द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी. तो ए होची इनिशियल पोजीशन बा इनिशियल पॉइंट, बी होची द फाइनल पोजीशन बा फाइनल पॉइंट. So जेमती मु कहिछि remember that displacement is directed from the initial to the final position. जदि particle टा move करिवो from B to A then आमे arrow mark केमे देबा from B towards A. but ए example रे जेहेतु particle टा travel करिछि from A to B तो आमे एठी arrow mark देछि from A towards B. Is that clear? So this is the difference between distance and displacement. तो मन रखता डिस्टेंस को हमें जिन मेजर करते मीटर किंबा सेंटीमीटर किंबा किलोमीटर यूनिट रे ठीक सेमिति डिस्प्लेसमेंट पाए भी आमे लिखि परिबा मीटर किंबा सेंटीमीटर किंबा किलोमीटर. तो एसआई यूनिट फॉर डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, एटा यूनिट सेम रहिबो. इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट विल बी सेंटीमीटर, अगेन एटा सेम रहिबो एंड द लार्जर यूनिट विल बी किलोमीटर. ठीक छै. सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव द सेम यूनिट. किंतु जेमती मु कहली vehicle रो जो ओडोमीटर थाए द ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस, इट डज नॉट मेजर द डिस्प्लेसमेंट, इट ओनली मेजर्स द डिस्टेंस. तो जो पाथ रे vehicle जीवो से पाथ रो लेंथ को मेजर करिवो ओडोमीटर. ओके. तो एबे हम केतरा एग्जांपल देखिबा सो दैट हमर कांसेप्ट आहुरी क्लियर हे जीवो जे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम केमती कैलकुलेट करिबा. तो वेरी सिंपल एग्जांपल देबी मु एठी. देखो सपोज गोटे पार्टिकलटा पॉइंट ए रे अछि तो एबे कोन हबो ना से गोटे एमती गोटे सेमी सर्कुलर पाथ रे मूव करिवो आसे कि पॉइंट बी रे पहुंच गेला. ठीक अछि. पॉइंट ए रु बाहरला आ आसे कि पॉइंट बी रे पहुंच गेला. आ जो सेमी सर्कलटा जो से कवर कला सेमी सर्कुलर पाथ तार रेडियस केते देछि द रेडियस इज r. ठीक अछि. सपोज r इक्वल टू लेट अस से 7 मीटर. ठीक अछि. एबे पचारा जीवो जे से पार्टिकलटा केते डिस्टेंस कवर कला आ केते डिस्प्लेसमेंट कवर कला. तो जेमति मु कहितली डिस्टेंस रो मीनिंग कोन ना द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड. तो एक्चुअली पार्टिकलटा केमति मूव करिछि ए कर्व ए सेमी सर्कुलर पाथ रे कवर करिछि. तो ए सेमी सर्कुलर पाथ रो लेंथ मु जहा पाइबी ठीक अछि ताकू मु कहिबी डिस्टेंस कहिबी. तो जदी गोटे सेमी सर्कुलर रेडियस r हुए तो तार सर्कमफरेंस केते हबो the circumference will be pi into r. तो ये distance केते हबो distance हबो length of बा आकम लिखि परबा एठी circumference of the semicircle. circumference of semicircle सेटा केते सेटा हबो pi into r. pi केते pi होची 22/7 आ एठी r केते कहै छै r कहै छै 7 मीटर. सो एटा केते हेजो एटा हेजो 22 मीटर. ठीक अछि. तो एई जो अछि सेमी सर्कल जो सर्कमफरेंस अछि तार लेंथ हमें केते पाइले 22 मीटर. सो डिस्टेंस विल बी 22 मीटर. बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. जेमति मु कहली डिस्प्लेसमेंट होछि कोन एटा होछि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स. हमें देखिबा जे इनिशियली बॉडीटा कोठला पॉइंट ए थला एंड फाइनली इट रीचेस एट द पॉइंट बी. तो एबे में कोन करिवा सिंपल वे कोन करिवा ए को बी रे जॉइन कर देबा. ठीक अछि. इनिशियल पोजीशन को मैं जॉइन कर देबा कोठी विद द फाइनल पोजीशन. तो ए जो ए बी जो लाइन पाइली जो स्ट्रेट लाइन पाइली से स्ट्रेट लाइन रो लेंथ होची डिस्प्लेसमेंट.
तो ए बी कौन ए बी हो डायमीटर ए बी विल बी द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल तो ये डिस्प्लेसमेंट रो वैल्यू केते आसीबो द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी diameter and we know that the diameter is twice of radius 2r तो ये लिखिबा 2 into r केते r होची 7 meter that will be equal to 14 meter ठीक अछि तो डिस्प्लेसमेंट रो वैल्यू केते बाहला 14 meter बाहला and the value of distance is 22 meter तो अगेन हमें कोन देखले एठी ना डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट 22 meter is greater than 14 meter तो जेमति मु कहितली जे डिस्टेंस रो वैल्यूटा आइदर ग्रेटर हबो किंबा इक्वल हबो विथ डिस्प्लेसमेंट तो हमें देखले एठी 22 meter is the distance 14 meter is the displacement so it is proved that distance is greater than displacement but एबे जदि गुटे मु क्वेश्चन पचारिबे जे गिव एन एग्जांपल वेयर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल हैव द सेम वैल्यू को केस रे डिस्टेंस आउ डिस्प्लेसमेंट रो वैल्यू सेम आसीबो ना जदि गोटे पार्टिकलटा स्ट्रेट लाइन रे मूव करछि सपोज ए रु बाहरला गोटे पार्टिकलटा एंड से स्ट्रेट लाइन रे मूव करके आसी पॉइंट बी रे पहुंचला तो से केस रे कोन हबो ना एक्चुअल पाथ कवर इज द स्ट्रेट लाइन से ए स्ट्रेट रोड रे मूव करिछि तो डिस्टेंस केते हबो लेंथ ऑफ AB will be the distance and what is displacement now it is a straight line joining the two points joining the initial point with the final point तो एठी distance जहा displacement से त माने एक्चुअल पाथ ही होची कोन स्ट्रेट लाइन तो मन रखता जदी गोटे पार्टिकलटा गोटे स्ट्रेट लाइन रे मूव करूची विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन देन से केस रे कोन हबो distance out displacement same रहिबो so let me write this point here if a body travels in a straight line without any change in direction then distance and displacement have the same value so it is mention kali je without any change in direction तार मीनिंग कौन लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट देखो सपोज एटा होची गोटे कोन एटा होची गोटे नंबर लाइन एटा होची हमर 0 नंबर एटा होची +1 +2 +3 +4 +5 एंड टुवर्ड्स लेफ्ट हमें कोन लिखिबा -1 -2 -3 -4 -5 ठीक अछि सपोज इमेजिन करो गोटे पार्टिकलटा स्टार्ट करियो फ्रॉम ओरिजिन एंड से राइट को मूव करिवो लेट अस से 4 मीटर ठीक अछि आज के पॉइंट एठी पहुंचला ठीक अछि 4 मीटर कवर कला तो ए केस रे डिस्टेंस केते हबो 4 मीटर हबो एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट सेम 4 मीटर बट जदी कोन हबो ना पार्टिकलटा ओरु बाहरला एंड एम्प्टी मूव कला इट ट्रैवल्स 4 मीटर टुवर्ड्स राइट एंड देन इट reverses the direction and opposite आसे मूव करके आसे कोडी पहुंचला एडीस पहुंच गेला 2 मार्क रे पहुंचला तो से केस रे डिस्टेंस केते हबो इट ट्रैवल्स 4 मीटर टुवर्ड्स राइट एंड देन 2 meters टुवर्ड्स लेफ्ट एंड फाइनली इट रीचेस एट दिस पॉइंट सपोज एटा होची पॉइंट ए एटा होची पॉइंट बी तो ए केस रे कोन हबो ना डिस्टेंस केते हे जिवो डिस्टेंस हे जिवो 4 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल केते 6 मीटर ठीक अछि बट डिस्प्लेसमेंट केते हबो मु कोन कहली ना आमे देखिबा जे डिस्प्लेसमेंट हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ना आमे देखिबा जे पार्टिकल रो इनिशियल पोजीशन कोडा थिला एंड व्हाट इज द फाइनल पोजीशन तो एठी में कोन देखले द इनिशियल पोजीशन इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज द फाइनल पोजीशन तो ए आ बी भितरे केते रहला डिस्टेंस एटा होची 2 मीटर so here the displacement will be 2 meter ता माने मन रखो जदी गोटे पार्टिकलटा तार डायरेक्शन चेंज कर देबो देन डिस्टेंस आउ डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आसीबे
किंतु जदि गोटे पार्टिकल गोटे स्ट्रेट लाइन रे मूव करिवो विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन then distance and displacement will have the same value. So from this discussion it is clear that distance is always greater or it can be equal to the magnitude of displacement. सो ये जो मु गोटे सिंबल दउची आर माने कटा होची मैग्नीट्यूड ठीक अछि जो दिटा लाइन मु ड्रा कली ता माने कोन ता माने होची द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर और इट कैन बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो यदि क्वेश्चन पचार देबो जे डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ए जो रेशियो रे केते हबो. So this ratio will be either greater or equal to 1 जेहेतु in this fraction the numerator is distance, the denominator is displacement, so distance is always greater or in some cases it may be equal to displacement. So this ratio will be greater or equal to 1. तो जदि distance और displacement equal हो जिवे then the ratio will be equal to 1 और जदि distance टा greater हो जिवो then the ratio will be more than 1. ठीक अछि. Then we'll discuss about what are the other differences between distance and displacement. तो मन रखता जदि गोटे पार्टिकल मूव करूची बा गोटे बॉडी मूव करूची तो सेही केस रे कोन हबो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 or negative for a moving body. For a moving body. तो जदि गोटे बॉडी मूव करूची तो से केस रे डिस्टेंस आउ डिस्टेंस केबे भी 0 ही परिबनी किंबा नेगेटिव ही परिबो नाही. ठीक अछि. किंतु डिस्प्लेसमेंट 0 ही परिबो पॉजिटिव ही परिबो आउ नेगेटिव ही परिबो. डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी 0 और इट कैन बी नेगेटिव. तो पॉजिटिव केमती हेबो सिंपल एग्जांपल मु देबी एठी हाउ द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव. सपोज एटा हाउ गोटे नंबर लाइन एटा हाउ ओरिजिन एटा हला +1 मीटर +2 मीटर +3 मीटर +4 मीटर +5 मीटर एटा हाउ -1 -2 -3 -4. जेमती मु कहली जे डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी सो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो एठी हमें डायरेक्शन को जो चूज करिबा जदी पार्टिकल टा पॉइंट 0 रु बा पॉइंट ओ रु राइट को जीवो द डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव एंड इफ ट्रैवल्स टुवर्ड्स लेफ्ट देन इट विल बी नेगेटिव. ओके तो देखो सपोज फर्स्ट एग्जांपल मु कोन कहूची ना पार्टिकल टा स्टार्ट करिबो कोठू फ्रॉम पॉइंट ओ आरंभ कला एंड इट ट्रैवल्स 4 मीटर टुवर्ड्स राइट. तो ए केस रे कोन हबो displacement केते हिजबो इन द फर्स्ट एग्जांपल द डिस्प्लेसमेंट विल बी 4 मीटर इट इज पॉजिटिव. ठीक अछि. नेगेटिव केते बड हबो बा आगे देखिबा 0 केते बड हबो. सपोज पार्टिकल टा पॉइंट ओ रु स्टार्ट कला ठीक अछि से मूव कला 4 मीटर टुवर्ड्स राइट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट द पार्टिकल रिवर्सेस द डायरेक्शन एंड अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट ओ आसी सेम पॉइंट ओ रे पहुंची गला. ठीक अछि. तमने जो पॉइंट रो बाहरला आसी से पॉइंट रे पहुंचला. इमेजिन करो गोटे पार्टिकल एमती ए पॉइंट रे अछि गोटे सर्कुलर पाथ रे कवर करी आसी के एठी पहुंची गला. ठीक अछि. किबा जे कोन से गोटे एमती कर्व पाथ रे एठु बाहरला एंड जे कोन से गोटे कर्व पाथ रे मूव करी आसी के पुनी सेम पॉइंट रे पहुंची गला. ता माने जदी गोटे पार्टिकल रो इनिशियल पोजीशन आउ फाइनल पोजीशन जदी इक्वल हे जिवो सेम हे जिवो तो सेही केस रे डिस्प्लेसमेंट हे जिवो 0. काहे कि आमे कोन कहिचे ना डिस्प्लेसमेंट र मीनिंग कोन द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स. तो जदी आमे गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रा करंती केमती फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. तो जदी दुटा का पॉइंट सेम हे गेला वी कैन नॉट ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन. जदी ये गोटे पॉइंट थिबो तो आमे गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करि परिबा. किंतु इनिशियल पॉइंट जोटा फाइनल पॉइंट भी सेरा थिबो तो सेही केस रे आमे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करि परिबा नाही. ठीक अछि. तो मन रख इफ ए पार्टिकल returns back to the same position or to its initial position तो से केस रे कोन हबो डिस्प्लेसमेंट ता 0 हे जिवो. ठीक अछि. डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. ओके नेक्स्ट देखिबा
how the displacement can be negative. Again, suppose the particle starts from point O, it travels 4 meter towards right, and then it reverses the direction, it travels 6 meter towards left. ठीक अछि point O रु बाहरला देखो एटा 1 2 3 4 4 मीटर जिवो राइट को, देन पुनी पछु आसीबो 6 मीटर 1 2 3 4 5 6 एट 80 पहुंचला. So finally the particle is at this point B. Initially the particle was at the point A. तो एबे हमें कौन करिबा जो डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करिबा केमती ड्रॉ करिबा joining the initial position with the final position. तो एबे हमें कौन करिबा A को जॉइन कर दबा B रे एमती A को जॉइन करिबा B रे एमती गोटे एरो मार्क दबा. ठीक अछि. तो एबे जो एरो मार्क दिया हला दिस एरो मार्क इज टुवर्ड्स लेफ्ट त माने नेगेटिव रे अछि. तो से केस रे कोन हला हमें देखले डिस्प्लेसमेंट केते बाहला डिस्प्लेसमेंट इज फाउंड टू बी नेगेटिव दा केते बाहला -2 मीटर बाहला. ठीक अछि. किंतु डिस्टेंस ता केबे भी नेगेटिव होबनी किबा जीरो होबनी काहे कि ना डिस्टेंस केस रे आमे केबे भी डायरेक्शन को इंक्लूड करने. तो जते बेले से जे कोन सी पाथ रे ट्रैवल करू जदी आमे गोटे एमदी सर्कल नेचे से पॉइंट ए रु बाहला आसे पुणी आसे से सेम पॉइंट रे मिसी गला. तो ए केस रे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जिवो किंतु डिस्टेंस केते हबो द लेंथ ऑफ दिस सर्कल बा हम जाको सर्कमफरेंस कहूचे द डिस्टेंस विल बी 2 पाई आर. ठीक अछि. किंतु डिस्प्लेसमेंट केते हो जिवो जीरो हो जिवो. ठीक अछि. सो मन रखो जेमति मु कहली जे डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. जदी कोटे बॉडी मूव करूची द डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. It can never be negative or it can never be zero, but displacement can be positive, can be negative, or it can be zero. And distance and displacement they have the same unit. हमें SI रे कहिबा मीटर, in CGS centimeter, and the bigger unit will be kilometer. And we also have light year, we also have astronomical unit. So it is your task to find out what is the meaning of astronomical unit, what is its value, what is the meaning of light year, and what is the value of 1 light year. So students आज हमें discuss कले the difference between rest and motion, what is position, how to determine the position of an object, what is distance, what is displacement, similarities between them and differences between them. So I hope that all of you have understood these 4 concepts, that is rest, motion, distance and displacement. तो जदि किसी डाउट अछि you can ask me in the comment section. In the next class we will discuss about 2 more important terms, that is speed and velocity. जेमते discuss कले distance and displacement, we discuss about the difference between them. In the same way we will discuss about the meaning of speed, the meaning of velocity, what are the similarities between them and what are the differences between them. So ठीक अछि पुन देखा बा next video रे. So till then have a nice day and bye bye.